हेलो माय अमेजिंग फ्रेंड, आई एम डॉक्टर पूर्ति त्रिवेदी, आपकी साथी। मुट्ठी में कुछ सपने ले, भरकर जीवों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। हम सब यंग है, आगे बढ़ने वाले, नए नए सपने, नए नए साथ हम सबको मिल रहा है। बट ये पैंडेमिक कंडीशन में एवरीवन हैज टू थिंक अबाउट देमसेल्व्स। बहुत सारे लोगों के मन में एक बिजनेस का आइडिया रहता है, एक एंटरप्रेन्योर बनने की चाहत रहती है, बट उसके साथ थोड़ा अपग्रेडेशन, थोड़ा नया टेक्निक, थोड़ा नया मार्केट में जो नया कॉन्सेप्ट आया है, उन सब का आगे बढ़ने के लिए थोड़ा इंफॉर्मेशन रहता है। तो दैट थिंग हेल्प अस अ लॉट टू ग्रो इनटू द मार्केट। मैं डॉक्टर पूर्ति त्रिवेदी आपके साथ ही एसके मीडिया टेक टीम लॉकडाउन के टाइम से आपके साथ नया कॉन्सेप्ट, नया टॉपिक लेके एवरी संडे 4 o'clock आपके सामने आता है। एसके मीडिया टेक टीम की यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके आप जब भी चाहे आपके अपने फ्री टाइम में ये कन्वीनियंस आप दे, हम लोग देते आपको कि आप अपने आप को अपग्रेड कर सके। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये टॉपिक दिस इज कंसिडर एज द लेटेस्ट टॉपिक, that is a lean canvas. What is lean canvas? How it will work you, how it will help you, और लीन कैनवास को यूज करके आप अपने बिजनेस में या कोई भी आप फील्ड में हो उसमें आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वो हम स्टेप बाय स्टेप आज के ये वेबिनार में सीखेंगे। I am very much thankful for our associated partner of Ask Media Tech team, Dr. Atul Kumar Mishra, Dr. Sujal Patel, also associating with us and helping us, upgrading us to solve, to upgrade our life in the each and every way. A small initiative of Ask Media Tech team to help you out, to upgrade your knowledge and help you to spread a positivity in the world. So one more efforts, this is the 23rd webinar and we are doing that is for you. So without wasting a time, let us start our webinar. So this is the 23rd webinar, sorry. And the topic of this webinar is ways to present your business model with Lean Canvas. Lean Canvas क्या है? आपके बिजनेस में ये मॉडल आपको कैसे यूजफुल हो सकता है, वो हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। So again, I welcome you for the unique and self-development webinar. एंड दिस इज वेरी यूनिक टॉपिक। आउट ऑफ बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं आपको कि आपको पता होता है कि ये टॉपिक तो लीडरशिप बारे में, तो ये लीडरशिप के बारे में ये बता सकते हैं, मार्केटिंग एंड सेल्स थोड़ा बहुत फंड आपको पता होता है। बट आई एम 100% श्योर दिस इज 100% a न्यू टॉपिक फॉर यू, दैट इज लीन कैनवास। और लीन कैनवास आप कैसे बना के आप अपने बिजनेस को सेटअप कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। This webinar I am trying to come across with you, and the majority of the thing I will consider that is in the Hindi. The reason behind that is बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बिजनेस में ऑलरेडी एंटर होते हैं, दे आर नॉट दैट मच फ्लुएंट विथ इंग्लिश, और उनके लिए स्पेशली ये वेबिनार में अगर हिंदी में बताऊंगी तो उनको ज़्यादा रहता है। अदरवाइज दिस इज अ नेशनल चैनल, हिंदी इंग्लिश वी बोथ आर यूजिंग, and sorry for those persons who only understand English, but little bit आप थोड़ा manage कर दीजिएगा। and I will try to cover both of the language, and मेरा यही main aim है कि whatever the message I wanted to pass it for the welfare of you, आपको वो benefit मिले। एक बिजनेस का ख्वाब रख के भूल गया, कल आई थी बहुत सालों के बाद सताने के लिए, सोचता हूँ इस बार जाने ना दूँ। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम लोग आउट ऑफ 10 लोग को अगर बोले तो 10 में से 7-8 लोग ऐसा बोलते हैं कि उनको अपने बिजनेस में करना है, उसमें आगे बढ़ना है। But due to the responsibility, due to this personal responsibility, family expectations and everything, anyhow they are unable to fulfill that dream.
और जब मन में ये बात आती है तो ऐसा लगता है कि अगर कुछ कर लिया होता तो अच्छा होता, अभी बहुत लेट हो गया, या रिस्क ले लिया तो अच्छा होता, अभी बहुत लेट हो रहा है। सो वो चीज आती है। बट आई जस्ट रिक्वेस्ट एनी ऑफ द पर्सन हु वांटेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर, अगर आपको ऐसा है तो यू स्टार्ट विथ मूनलाइट एंटरप्रेन्योर। नाउ व्हाट इज मूनलाइट एंटरप्रेन्योर? That webinar I have conducted at my last webinar session. So you just go to our Ask Media Tech channel and you come to know that is what is Moonlight Entrepreneur. और आप Moonlight Entrepreneur से start करते हुए, when you get a confident, when you have a financial bonding and everything, then you can switch over to your business. That's so easy. So on behalf of Dr. Atul Kumar Misra, me, Dr. Purti Trivedi and Sujal Patel welcome you for this webinar. I completed my 15 years in the pharmaceutical industries, and I am a co-founder of Ask Media Tech team also. I never dream about a success. I work for it, and that is an attitude should have of an entrepreneur. The entrepreneur should work on the focus model. Now, what is a focus model? The focus model is follow one course until you get a success. So, this is just a brief. Now, let us proceed towards the topic of the day, the business model canvas, and how to document your business model hypothesis. The business model canvas, that is the lean canvas that has been invented by Ash Moria, and there are few basic principles. So see, entrepreneur are everywhere. When I was doing one IIM Bangalore course, I used to remember that my sir is telling that the entrepreneur are everywhere. And second, idea is just a 10%. Even he is telling that idea is not even a 10%. Idea is just less than 10%, and rest of the percentage is about the executions. तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मुझे भी आपको शेयर करना है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिसके माइंड में आइडिया आते हैं, बहुत सारे आइडियाज आते हैं, यूनिक आइडियाज आते हैं, बट एनी हाउ दे आर अनेबल टू शेयर इट टू अनदर पर्सन। क्यों? ये थिंक करते हुए कि ये आइडिया मेरा यूनिक आइडिया है, ये अगर चोरी हो गया तो क्या होगा। ऐसा बहुत सारे लोग ऐसा थिंक करते हैं, ड्यू टू दैट ही इज अनेबल टू डू अ बिजनेस एंड साइमल्टेनियसली नॉट अदर पर्सन्स गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डू अ बिजनेस. So entrepreneurs are everywhere. So idea is not everything. Just to forget, if you have a unique idea that will not work out, but the idea of your will work out only if you execute it. So idea is not everything. The executions of an idea is everything. So entrepreneurs are everywhere. सबको माइंड में आइडिया आते हैं, and that leads the persons to a startup. स्टार्टअप बहुत तरीके से होता है. स्टार्टअप से फॉर्च्यून 500 में से मेजोरिटी जो टॉप अर्निंग कंपनी है वो एक स्टार्टअप वेंचर से ही स्टार्ट होती है. दैट स्टार्टअप वेंचर स्टार्टेड फ्रॉम द जीरो टू अनलिमिटेड. कहीं ना कहीं किसी को तो शुरुआत करनी ही होती है. So a startup is a human institution designed to create a new product, services under the condition of extreme uncertainty. That means entrepreneurs are everywhere. A lean startup approach can work in the size of the company, even a large enterprises in any of the sector or industry. Second, entrepreneur is a management. Entrepreneur कोई भी बन सकता है. Entrepreneurs are not a born entrepreneurs. Entrepreneurs are a made entrepreneurs. और ये मैं नहीं बोलती, मैंने जो IIM का कोर्स किया है, मेरे जो प्रोफेसर थे डॉक्टर सुरेशर, he used to tell that entrepreneurs are everywhere and entrepreneurs are not a born. Entrepreneurs are a made. And third is a validate earning. The startup exists not just to make a stuff, to make a money, or even a serve customers. They exist to learn how to build a sustainable business. This learning can be validated scientifically by running. Excuse me, wait for 1 minute, please. Validate learning. Sorry, I just forgot wherever. Okay.
They exist to learn how to build a sustainable business. These learnings can be validated scientifically by running a frequent action that allow entrepreneur to test each element of their versions. स्टार्टअप किससे स्टार्ट होता है? स्टार्टअप बेसिकली मैं आपको बताऊं तो एंटरप्रेन्योर कोई भी हो सकता है। आप में को अगर ऐसा लगता है कि आपके पास यूनिक कॉन्सेप्ट है, आप अपने सराउंडिंग में कुछ देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम को महसूस करते हैं और वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन टेक्नोलॉजिकली या कुछ सिस्टमेटिक वे से या नए इनोवेशंस के साथ या नया कॉन्सेप्ट लेके या नए तरीके से अगर कुछ करते हो तो इट मीन्स यू आर eligible to be an entrepreneur. So innovations, accounting innovations है, and then build, measure, learn. The fundamental activity of startup is to turn ideas into the product. आपको मैंने अभी ही समझाया कि स्टार्टअप कोई भी लोग कर सकते हैं। नए स्टार्टअप के लिए ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि उनके पास पैसे हो गए तो वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते। सबको सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, और पैसे नहीं है क्योंकि उसकी वजह से मैं मेरा बिजनेस सेटअप नहीं कर सकता हूँ। कुछ भी हो सकता है। डेफिनेटली फाइनेंस, आई एम नॉट डिनाइंग इट, फाइनेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी ऑफ द स्टार्टअप। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिसने अपना बिजनेस जीरो से चालू किया है, थोड़ा स्मॉल इन्वेस्टमेंट से चालू किया है और वो अपना बिजनेस एक्सपांड कर रहे हैं। लाइक एनीथिंग, इफ यू हैव अ टैलेंट, इफ यू हैव अ स्ट्रांग डिटर्मिनेशन, इफ यू हैव अ विजन, इफ यू हैव अ फेथ इन योरसेल्फ एंड इफ यू हैव अ कॉन्फिडेंस इन योर प्रोडक्ट, your startup is bounded to get a success. So build a measure, learn. The fundamental activity of a startup is to turn ideas into the product that are measured, that measures how the customer responds, and then learn what to pivot or preserve. All successful startup process should be gathered to accelerate that feedback loop. नाउ व्हाट इज एक्सेलरेट फीडबैक लूप? स्टार्टअप कैसे चालू होता है? स्टार्टअप ऐसा नहीं है कि आपको कोई आइडिया आया, सडनली आपने मार्केट में वो प्रोडक्ट लॉन्च कर लिया। सी दैट थिंग विल नॉट एग्जिस्ट एनी लॉन्ग, क्योंकि पॉसिबल है कि आपको जो प्रॉब्लम दिखे वो प्रॉब्लम रियल में मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। या आप अर्ली स्टार्टअप वेंचर है या आप पोस्ट स्टार्टअप वेंचर है। नाउ व्हाट इज अर्ली स्टार्टअप वेंचर? अर्ली स्टार्टअप वेंचर क्या होता है? फॉर एग्जांपल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 1990s एंड कोई बंदा अगर अमेरिका से इंडिया आया हुआ है, अभी उस टाइम पे नेट इतना यूज नहीं होता है, बट उस किसी बंदे को ऐसा मैसेज आया है कि मैं एक यूट्यूब चैनल करके एक एजुकेशन चैनल स्टार्ट करने जा रहा हूँ। नाउ द कॉन्सेप्ट इज वेरी गुड, बट नाउ दैट टाइम विल नॉट परमिट, क्योंकि 1990s में यूट्यूब यूज करने वाले लोग कितने रहेंगे? यूट्यूब को यूज करके इवन नेट यूज करने वाले लोग कितने रहेंगे? और 1990s में आपको पता था कि नेट कितना कॉस्टली है। सो लुकिंग टू द इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो नेट वेरी फ्रिक्वेंटली यूज नहीं कर रहे होंगे। इवन मैं बोल रही हूँ कि आज से 5 साल पहले भी, बिफोर जियो, वी आर नॉट दैट मच frequently user of YouTube. So that startup is called a pre-startup. मीन्स कि वो जब उसका टाइम था उसके बहुत पहले का आगे का थिंक करके उन्होंने स्टार्टअप डेवलप किया था, तो उसका सक्सेस होने का जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाता है। पोस्ट स्टार्टअप ऐसा है कि 10 प्रोडक्ट्स मार्केट्स में ऑलरेडी आ गई है, आप नहीं एंटर कर रहे हो, आपके लिए वो कॉन्सेप्ट नया हो रहा है, बट मार्केट में ऑलरेडी वो कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड अ पोस्ट स्टार्टअप। सो यू हैव टू थिंक इट आउट। पॉसिबल है बिल्ड, मेजर, लर्न मीन्स द फीडबैक लूप। नाउ अगर हम आगे नई स्लाइड्स में तो सीखेंगे कि लीन स्टार्टअप में आप अपने बिजनेस को इफेक्टिव वे से कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, आप कैसे एनालाइज कर सकते हो, आप प्रॉफिटेबिलिटी, सेल्स, रेवेन्यू, कॉस्टिंग, एवरीथिंग आप कैसे सेटअप करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। So this is just now this is a few of the informations related with the feedback loop. Now what is feedback loop? First you get an idea, you build it as an experience or a market value propositions to test these assumptions on the market.
Now, when you think of any of the product to come up, you measure with the customer behavior during that experience. आप product market में लेते हैं, आप अपने customer को feedback लेते हैं, आप customer को पूछते हैं कि how do you find this product, what are the feedback they are giving to you, what are the changes you required to do it. You gather a data, you learn, and then you come up with the final product. So learn if your assumptions is true or false. Now, what if it is true? If it is true, then move on to the next riskiest assumptions. And if it is a false, review your hypothesis. Now, what is your now? See, those persons who did an MBA and they are those who are from the management field. They come to know about the hypothesis and a little bit about the lean canvas. But जो बंदा अपना एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना चाहते, बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते, बट दे डिडंट फ्रॉम द मैनेजमेंट बैकग्राउंड, उनको ये बहुत सारे टर्म्स ऐसे होते हैं कि उनके लिए नए होते. So I will try 100% to give the explanations of the newer words. So those people who are from the non-management background, they come to know that what are the meaning of this. Now review your hypothesis. Now what is the review of hypothesis? Hypothesis, you can take it that you are considering one problem, you wanted to solve it out. So that problems you have take a task and that you as considered as a hypothesis. And when you are trying to solve that problem, or when you are changing that problem, or where you find there is a something the change is required, that means you are reviewing your hypothesis. Now test your plan. The lean startup is started with the test your plan. थोड़ा ये टॉपिक नया है, इसीलिए थोड़ा हैक्टिक भी लग रहा है. थोड़ा ये टॉपिक नया है तो आपको समझने के लिए भी थोड़ी डिफिकल्टी होगी, बट बिलीव मी, I am 100% sure that after this webinar you come to know that how this lean startup is very useful for your new entrepreneurship. So lean startup test your plans using a new build measures, learns diagrams, the questions, and becomes what the hypothesis should I test. This is precisely the purpose initiate learns from this web diagram. You can come to know, document your plan, identify the risk parts of your plan, and systematically test your plan. Later on you will come to know what is it. And the objective of a lean canvas is for the better exploitations of human creativity and financial resources in the startup. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि प्रोडक्ट को डेवलप करने में बहुत टाइम लगा देते हैं, या बिजनेस मॉडल. हमारे पुराने जमाने में जब कोई भी कंपनी, कोई भी एंटरप्रेन्योर जब बिजनेस मॉडल प्रेजेंट करता था, वो बिजनेस मॉडल रहता था 25 to 50 पेजेस का, जिसमें उसके बिजनेस के बारे में बहुत सारा डिटेल्स डालते होते. वो बिजनेस मॉडल्स, इट इज नियर अबाउट 25 to 50 पेजेस एंड इट टेक्स नियर अबाउट 3 to 6 months फॉर द एंटरप्रेन्योर टू प्रिपेयर इट. Or when the business actually started, or when the ventures actually started, that may be a chances कि वो business model डायरेक्टली इतना इफेक्ट नहीं करे या थोड़ा यूजलेस हो जाए. So this is a lean canvas, that is the one page documentations that helpful to you to understand everything about your business, about the problem you are solving, whatever the solutions you are providing, whatever the market value propositions you have, to which channel partner you are promoting your product, what are the costs, what are the revenues, everything you will get in the one sheet. And when you come up, when you fill up that one particular sheet, you will come to know that where you are in your business, or what you are required to do if you are with the problem, that problem, and how to solve it. So the stop wasting of a time, money and resources. प्रोडक्ट डेवलप करने में बहुत सारा टाइम लगा देते हैं, उसके बाद ऐसा एहसास होता है कि ये प्रोडक्ट में जितना टाइम लगाया है उसके बाद में इतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिला है. So what are the another option, what are the other resources you can utilize instead of wasting the time in product development? Bring faster the accurate desired product in the customer's hand through this lean canvas. Mix together customer development or product development. So these are the basic objective of preparing a lean canvas. Now, let us start our lean canvas.
I will help you out. If you have a time, you just take one book, yeah, plain paper, take a pencil, so that by the end of this webinar, you come to know that how to fill up the lean canvas. Now, the three facets of a business model hypothesis. First, you have to find out what are the problem is exist already and how you are going to address that problem. What is the problem you are trying to solve it out? So first, everything is started with the testing of a hypothesis, finding out a problem. Second, you have to search it out. What are the customers you have? What they people have a problem, and third is how you are going to solve it out that problem, that is product or a market problem. So how do you solve this problem? The, excuse me, how do you solve this problem? How big is the market? What are going to reach these customers? How do you drive these demands and how you will make money? So this is all about what the problem customer has, who are the customers, and how the problems, how the product and market is related with. So if you identified all these things, you will come to know that what are the actual problem is there and how you are going to solve it into the market. Now see, there is the gap between the business plans and business model. The business plans is a written document, as I have told you. बहुत डिटेल में नहीं जाते, 25-50 पेज का बिजनेस प्लान होता है और वो बनाने में बहुत टाइम लगता है. Now the business model is the plain implementations of a company is to generate a revenue and make a profit from that thing. So this is about the business model and why you have to choose this business model, that is the lean canvas model. A business model describes a rationale of how an organization creates, delivers, and captures value. It's simply intuitively understandable and suitable for the iterative development. Iterative development, sorry. So, what is the iterative development? See, iterations is always there. When once you prepare a lean canvas, you have to frequently iterate it. You have to frequently do iterations as and when you are getting a feedback from the market, as and when you are talking with your customers. So many things is required to be a change. सो फर्स्ट यू जस्ट थिंक ऑफ द लीन कैनवास, आप लीन कैनवास बनाइए, उसके बाद आप मार्केट में जाइए, आप अपने कस्टमर के साथ बात कीजिए और कस्टमर को फीडबैक लीजिए. अगर ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं तो यू विल फाइंड अ वेरी गुड कस्टमर्स वेरी शॉर्टली. अगर आप मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करते, आपका टोटली नया स्टार्टअप है, तो ये आपको आपका कस्टमर को समझ के उस कस्टमर के साथ बात करना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, मार्केट में जाना पड़ेगा. ये कोविड कंडीशन में पॉसिबल है, तो टेलीफोनिकली या थ्रू द सर्वे, थ्रू गूगल लिंक, व्हाट एवर यू गो, एंड आप उनका फीडबैक लीजिए. आफ्टर यू रिसीव दैट फीडबैक, there may be a chances you will get a chance for the iterations of your lean canvas. Why not choosing a business plan? Because a documentation investors makes you write that they don't read. A business model is a single diagram that describes entire your business, and that is why you have to select a business model. Now, business model versus business plan. Business plan is a document investors make you to write that they don't read it, and simultaneously business model is a single diagram of your business जो एक पेज में पूरा आ जाएगा, एंड वो हम आज सीखेंगे कि कैसे करते हैं. बिजनेस मॉडल आपको हेल्प भी करेगा. आपको इन्वेस्टर को अगर दिखाना हो तो आप इन्वेस्टर को एक पेज में अपना बिजनेस का आइडिया पूरा दे सकते हैं. अगर आप बिजनेस प्लान बनाते हो तो 25-50 पेज का आप अपने इन्वेस्टर को दिखाते हैं, तो उनके लिए भी ये रीड करना वो सब बहुत डिफिकल्ट रहेगा. अगर आपको इन्वेस्टर चाहिए तो ये अगर बिजनेस मॉडल आप फॉलो करते हैं तो वेरी फ्रीक्वेंटली यू गेट अ वेरी गुड चांस टू एक्सप्लेन देम, जस्ट शो योर lean canvas, and if they are satisfied, they may invest in your venture also. So the reason why you should use business model canvas, that I'm not talking, Howard is talking. The business model canvas as opposed to a traditional intricate business plans and helps organizations conduct structures
tangible and strategic conversations around a new business or existing ones. So this is how this Lean Canvas is supported by the Harvard Business School also. The Canvas main objective is to help the companies to move beyond the product-centric thinking and towards a business model thinking. प्रोडक्ट सेंट्रिक थिंकिंग से लेके बिजनेस मॉडल थिंकिंग में आपको कन्वर्ट करता है लीन कैनवास। बहुत ही नया टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, और इसको आप अगर फॉलो करते, अगर आप अपना लीन कैनवास बनाते हो, आप अपना लीन कैनवास आइट्रेशंस करते हो थोड़े थोड़े टाइम पे, तो आई एम 100% श्योर कि आप यू विल बी अ गुड एंटरप्रेन्योर. So the ambitions of a measure is repeat 1,000 times. Repeat 1,000 times. I will never again say that I think that, but always I will measure that. Now what you will measure? You will measure the feedback of your customer. You will measure the need of need of the customers and the demand of the customers, the market need and everything. And then you think about your product, and you just find to try to solve it out the problems of a market. ये एक बहुत ही अच्छा फीडबैक है, या रिसर्च वी कैन से दैट 21% of new product service developments within the existing business model उतना होता है. 36% developments on the entirely new business में होता है. 19% strategic reorientations होता है. 15% रिनोवेट होता है एंड बिजनेस मॉडल, और बाकी का पूरा है, इसमें इतना जाने की जरूरत नहीं है. नाउ दिस इज द पर्सन who search out a lean canvas. The man behind a lean canvas is Ashmore. Life is too short to build something nobody wants. ये उसकी बुक है, उसने पूरा इंफॉर्मेशन दिया है दैट व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अ लीन कैनवास. और बिलीव मी, आजकल बहुत बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस जो है, हार्वर्ड इंस्टीट्यूशंस, IIM इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे लोग, ये सारे लोग लीन कैनवास को ही प्रमोट करते हैं इन द केस ऑफ अ न्यू एंटरप्रेन्योरशिप और इन द न्यू वेंचर फॉर्म. So the lean canvas is designed for the entrepreneurs by the Ashmoria. These are the benefits of a lean canvas and business versus business model canvas. That is, business model canvas is for the new and existing business, while lean canvas is for the startup business purely for the current. And yes, if you have already started since last 1 year, 2 year, 3 years, then also lean canvas is very helpful to you. The focus of a business model is a customer, investor, entrepreneur, consultant, and advisor, whereas the focus of a lean canvas is entrepreneurial. So these are another few of the things. You can just pause it. If you wanted to read, you can read, but I will not go in the very deep way. But rather than going into the deep way, I will help you to make your lean canvas. So now let us start. This is the model of a lean canvas. If you are a new entrepreneur, if you are thinking to come up with a new product, if you are already existed entrepreneur और आपको पता नहीं कि आपको lean canvas कैसे बनाना है, this is the model of a lean canvas you can be ready. Now, this is first a problem. You just have to identify what are the problems is there, solutions is there, what are the key activities, what thing you will do to solve that problems. Unique value propositions means what you people do have and how you will solve it out the problem of the customer or of the market or any of the services. Then unfair advantage. Now what is unfair advantage? Unfair advantage means uh, see, I'm working in the pharmaceutical industry since last 15 years. Now, if I wanted to enter or if I wanted to have my own pharmaceutical company, now unfair advantage is 15 years of work experience that I have, not others, another people have. So this is just an example of an unfair advantage. Second, I completed my PhD in pharmaceutical marketing and with the topic of factors influencing prescription habit of doctors in India, where I come to know that what are the factors, what are the reasons that why the doctors are prescribing my product. So this is the unfair advantage I do have that no other pharmaceutical entrepreneur has. So this is just an example
of an unfair advantage. What are the channels through which segment I will promote my product? So these are the channels. One, customer segment. Which type of the customers, what age factor, which segment, which niche, which territory, which age group I will focus my product. So these are the customer segments you must have to know before launching of any of the product, or whether you are already existed customers, you come to know. Sometimes it happens that फॉर एग्जाम्पल एक देती हूँ कि मानो कि अभी बहुत ड्यू टू दिस पैंडेमिक कंडीशंस बहुत सारे लोग डॉक्टर के पास जा नहीं रहे, तो एक बंदे ने ऐसा सोचा कि मैं डॉक्टर्स एट ए होम का एक स्टार्ट कर लेता हूँ, कि डॉक्टर्स एट ए होम सर्विस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर लेता हूँ, और ये उसका नया वेंचर है, ठीक है। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। और उसके लिए ही इज थिंकिंग टू कम अप विद द चैनल, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करता है। नाउ उसका टारगेट कस्टमर कौन रहेगा? उसका टारगेट कस्टमर रहेगा पेशेंट, राइट? नाउ can you think it out that what are the second targeted customer? सेकंड टारगेटेड कस्टमर उसका क्या रहेगा? पेशेंट तो वो ठीक है, चलो पेशेंट तो रहेगा ही, उनका कांटेक्ट करेगा, उधर चला जाएगा। बट हियर द टास्क इज दैट यू हैव टू थिंक ऑन ऑल द वे throughout the circle, from left side, from right side, from top side, from bottom side, every way you just have to use your mind. Brainstorming, brainstorming, brainstorming is required. So, so for me, I just think that the second customer target can be NRI student. Can it possible? I feel it is yes, because see, NRI students are living out of India. उनके लिए उनका पेरेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। उनको ऐसा गिल्टी होता है कि मैं मेरे पेरेंट्स के पास नहीं जा सकता हूँ, या डायरेक्ट डॉक्टर को मिलवा नहीं सकता हूँ, ऐसा गिल्ट फील होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, या बहुत सारे एनआरआई ऐसे होते हैं कि जो आउट ऑफ इंडिया एग्जिस्ट करते हैं, और उन लोगों को ऐसा गिल्ट फील होता है कि उनके पेरेंट्स डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं। तो हमारा सेकंड कस्टमर सेगमेंट एनआरआई रहेगा। अगर हम अपनी सर्विस उनके पास लेके जाए तो उनको वो एनरोल करा सकते हैं, वो शेड्यूल ले सकते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर को फीडबैक ले सकते हैं, डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट भी दे सकते हैं। और सेकंड, उनको कोई ऐसा गिल्ट भी नहीं रहेगा कि वो अपने पेरेंट्स का इतना ख्याल नहीं रख सकते। So these are the customer segments. So first you have to think it out the problem, and also you have to think it out what could be the another customer segment, so that वो सब जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है उनका सॉल्यूशंस लेके आए। अनदर इज कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड रेवेन्यू स्ट्रक्चर। सो दिस इज द मॉडल ऑफ अ लीन कैनवास। अगर आपके पास पेन है, अगर आपके पास डायरी है या कोई पेज है, तो आप अपने बिजनेस का वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, मैं जैसे बोलती रही हूँ, कंटिन्यू आपको इन्फॉर्मेशन देती रही हूँ, उस हिसाब से आप अपना लीन कैनवास अभी ही बना सकते हैं। सेकंड, आप अपने कस्टमर के साथ जब बात करेंगे, फ्यूचर में आगे बढ़ेंगे, तो उनका जो फीडबैक रहेगा उस हिसाब से आप आइट्रेशंस कर सकते हैं। नाउ सी, this is the field order for the lean canvas. First is to identify a problem. First is to identify a problem. Second, this is how you just have to fill it up. This is the number I have given. Harit, can you please on the fan? This is the number you have to fill it out. First, you have to identify the problem. Second, you have to identify the customer segment. Who are your customers? Third, what you have to fill is the unique value proposition. आप अपनी प्रोडक्ट में कौन सी यूनिक चीज डालेंगे, क्या यूनिक लेके आएंगे मार्केट में, जो करंट मार्केट प्रोडक्ट से थोड़ा डिफरेंट यूज होता है या थोड़ा डिफरेंट है। Fourth is you need to require out solutions. So ultimate, what is your product? What are the features you have added? What are the unique thing you have added? So what are your solutions? Which way you will perform into the market? And fifth is the channels. What, through which channel you are going to promote your product? Sixth is the revenue stream. Seventh is the cost structure, and eighth is the key metrics. Now, see, this is. Let me put it here.
This blue is a market risk, green is a customer risk, and orange is the product risk. Now, what are the product risks you will find out while you are filling up your lean canvas? If your product, if you're not identified in the proper way, there can be a product risk. Ultimately, the solution is, ultimately the unique value proposition is, and key metrics. So these all things goes wrong. That is the product risk if you have not identified your problem in the very effective way. Now, second, what are the green things that are the customer risk? The customer risk may be through which channel you are promoting your product. That may be possible कि आप ऑनलाइन फेसबुक मार्केटिंग करेंगे तो आपको बेनिफिट ज़्यादा रहेगा rather than going for the traditional method like literatures, holding and everything. So these are the things, the channel आप कौन सी यूज करते हैं, then may be a customer risk, and third, that is the market risk. Now what is the market risk? Ultimately the market risk is a sale. Ultimately the market risk is a profit. Ultimately the market risk is revenue. क्योंकि the whole purpose of doing this lean canvas, finding out a problem, come to know with the different sources and promoting and everything. The sole purpose of everything, every entrepreneur is earning a money, right? So the market risk is a revenue, profit that may hamper, and the cost may get a chance to incur. So you have to think it out. आप प्रमोशन एक्टिविटी में अगर पोस्टिंग करते हो, सो यू हैव टू थिंक इट आउट, could be another economical option which is available already with you. अगर आप यूज करते हो प्रमोशनल एक्सपेंस, अगर आप करते हो तो उसमें सेकेंड ऑप्शन क्या है कि जो कम प्रेस है, गोरिल्ला मार्केटिंग स्टाइल आप यूज कीजिए. नाउ व्हाट इज गोरिल्ला मार्केटिंग स्टाइल? वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है. गोरिल्ला मार्केटिंग का हम लोगों ने वेबिनार किया हुआ है. यू गो टू अवर एसके मीडिया टेक चैनल, यू कम टू नो दैट व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रेटजी यू कैन यूटिलाइज फॉर गोरिल्ला मार्केटिंग, एंड दैट विल हेल्प यू आउट. नाउ लेट अस फिल इट आउट दिस लीन कैनवास. आप बनाना चालू कीजिए. फर्स्ट इज स्टार्टेड विद द प्रॉब्लम. नाउ आइडेंटिफाइड three major problem which is already existing to the market and you wanted to solve it out. Write down on the first priority जो severe problem लगता है वो पहले लीजिए, second and third. So this is how the problem can be solved. Now second, just find it out what are the target customer you have. मैंने आपको example भी दिया है कि every angle just think it out who can be your target customer. What is the age group? What are the niche market you wanted to factor? So these are the things you have to think it out. Now another is solution. Now what are the top solutions you are providing into the market or your target customers? So these are the problem, major problem you find it out. The major problem, अभी मैंने एक example दिया था. The major problem is seniors or elders people in these pandemic conditions cannot go directly to hospital. Now what are the target customer? The target customers are the patients along with the NRI, I can say. Now third is the solutions. So what could be the solutions? The solutions could be like if I come up with the online platforms, online doctors at a home, and if I come up with any of the unique things. So what are the solutions of at all? Now unique value propositions. Now what is unique value propositions? What unique way, which unique thing you will include to solve that problem? So unique value propositions is a single clear compelling message that states why you are a different from and worth buying your products. Now what is the key area? The key area activity that drives retentions and revenue. आपको this is the thing which is very important, that is the key matrix. Now key matrix is the thing where you have to decide that through which source you are going to do the thing, which are the unique thing you will include, and activity that derives retentions and revenue. I am working in the pharmaceutical industry. If I am preparing my lean canvas, the key activity or key measures I will include is my medical representative. Now, why medical representative? Why they are the key metrics among one? Because through the medical representative,
I will train them, I will help them, I will upgrade them, I will give on a special training of a marketing, and ultimately they help us to get a sell out of the market. So this is the key measures. The another thing is a channel. That is the path of the customers, what thing you will going to learn. Now this is the cost structure. Now what is cost structure? Cost structure may be customer acquisition cost, distribution cost, hosting cost, people cost, promotional cost, marketing cost, salary cost, every cost, whatever you are incurring, you just have to prepare a plan, and out of that cost, then you have to think of the unfair advantage. Now, what is the unfair advantage? Unfair advantage can't be easily copied or brought. What do you mean by can't easily copied or brought? Unfair advantage means आप ऐसी प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ सकते हैं, या आपके पास कुछ ऐसी टैलेंट है, या आपके पास कुछ ऐसा चीज है कि जो मार्केट में कॉपी नहीं हो सकता है, या आपके पास कोई पैटर्न रिलेटेड प्रोडक्ट है. सो दिस इज योर अनफेयर एडवांटेज. सो यू हैव टू थिंक इट आउट व्हाट अनफेयर एडवांटेज डू हैव. बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ये मार्केट में बहुत चल रहा है, लाइक 100 लोग हैं तो एक 101. if I come up with the same kind of the thing, then ठीक है, चलो चलता है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है, इतना आपको नहीं मिलेगा. But if you have an unfair advantage, if you know, see sometimes what happens, what you are promoting, what you come up with, even though the same product, but the way you are presenting your product, that matters. So that could be your unfair advantage. If see, I'm working into the pharmaceutical industry, right? I require to have my own team. They have to go to the doctors and convince them to prescribe their product. Now, what could be my unfair advantage? I feel that my unfair advantage will be a strong marketing promotional tool. And how I will come up with the strong marketing promotional tool and 100% dedications of a medical representative. If I come up with GPRS reporting system that no other company is following, and where I know that where my medical representative is, what are the doctors they are meeting, and how they are convincing their product, and everything if I require to analyze. So technologically, I upgrade it as compared to other company. So these could be my unfair advantage. If I come up with a unique product that are the need of the market. For example, nowadays in the COVID conditions, so many people they are in the need of vitamin D3, zinc, vitamin C, and so many products. But if I come up with a unique market product that no other company has, and it is really in the need of the company, and if I file my patent of that product, get a chance, then that considers as my unfair advantage. And then ultimately last comes, that is the revenue in the terms of the profit, sales, and everything. So this is just an example of a Facebook. Now see, through this example you will come to know that how you can make it your lean canvas. Now the problem is online presence lacking, hard to stay in the contact. These are the problems Facebook has find when they come up into the market, when they are the new entrepreneur. So problem is first customer segment is the college and student. At the time they were focusing. Nowadays Facebook is used by everyone. I think लगभग कोई दादा भी हो गए, कोई बा भी हो गए, तो वो भी फेसबुक यूज करते हैं आज के टाइम में. The solutions they wanted to come out, that is the personal profile, friend connect, and all. Later on, the unique value proposition is keep in touch with the college and friends. These are the thing when the Facebook has come up and they prepare their lean canvas. The channels they will use is WHM student network, college bulletin boards, and all. MySpace for college. The unique value proposition is that we have already covered, and the cost structure is hosting, and that all thing. The revenue stream is through the advertising. क्योंकि Facebook free में है, तो उन लोगों ने ऐसा सोचा कि whatever they advertise, they will get, they will have a profit in that. So these are the key metrics of a Facebook. एंड वो 2004 में बनाया था. आज आपको पता है कि ये की मैट्रिक्स जब उन्होंने बनाया था, आज लिंक कैनवस बनाया था, सॉरी, आज फेसबुक कौन सी जगह पे है. और उसमें पॉसिबल है कि आइट्रेशंस आए, थोड़े थोड़े टाइम में आइट्रेशंस आए लुकिंग टू दिस, क्योंकि उस
उस टाइम उनका कस्टमर सेगमेंट कॉलेज स्टूडेंट था, बट आज फेसबुक सब लोग यूज करते हैं। आज फेसबुक एक मार्केटिंग टूल भी हो गया है। बहुत सारी कंपनी, बहुत सारी ऑनलाइन कंपनीज फेसबुक मार्केटिंग टूल यूज करती है। तो आज का जो लीन कैनवास है ये 2004 के लीन कैनवास से अलग रहेगा, आइट्रेशंस आएगा और उस हिसाब से उनको आगे बढ़ने का चांस मिलेगा। So these are just a theme. First, create a model, list assumptions, generate hypothesis, design experiments, run experiments, capture data, analyze results, decide next steps, and ultimately go to the. So these are just these how these ideas are there, build to the product, measure it with the data, and then learn and then come up with a unique product. So this is problem solving interviews. When you are going into the market, when you are meeting to the customers, how you can use it or how you can present the theme. No, I feel that we need not require to go in depth. That these are the things. This is very easy. You can do it, right? So now this is a revise your canvas. Now can't tell if it is a real person. Okay, online marketing problem, hard to stay connected. So these are the revised iterated lean canvas model. Identity validations, personal profile has identity verifications, friend connect. So these are the things that the iterations is required and Facebook has done. Then they come up with the what are the real problem, what are the wrong, what are the solutions, comes to know by ticking right or wrong. So in summary, I can use hope this is a new topic. Hope this is very clear to you. Let us again go to the lean canvas model so that you come to know that how this model is working, finding out the problem, then customer segment, solutions, the unique value propositions, the matrix, what are the cost structures, what are the unfair advantage you do have that no other exists into the market, what are the channels you are promoting through, and ultimately what are your revenue. So in the summary, using the lean canvas, you can expose a new thinking habit, be a basis for discussions, and enforce a succinctness, what it wouldn't be do. That contain all the things. I need not to go in that, but what it won't do. Contain all the information, captures with all rates, perform analysis, development strategies, and everything. So ultimately, these help you out in preparing your plan. This is the lean canvas model. Let me share one more thing with you, that I have prepared my lean canvas. Mm. Lean canvas 2. I will show you my lean canvas 1 and lean canvas 2 so that you come to know. See if you are able to see it. This is the lean canvas about my pharmaceutical company. What are the problems I have solved it out, solutions, unique value propositions, unfair advantage, assumptions, and all. So I feel that in these pandemic conditions nowadays, the need of increasing immunity has working. So this is how lean canvas 1. Then I did a few iterations. When I talk to the customers and I come to know, previously I was thinking that the product that helps, that is antibiotic and all, but then I come to know that the affordable product, quality product, and chronic segment has a very effective role, and that is how I upgraded my lean canvas with the new iterations and then fill it up. This gives me very clear idea that which segment I require to focus. Whether I require to focus into the consulting physicians, orthopedic physician and all. So this is how the lean canvas I have prepared. What are the core structures? That are salary, promotional, manufacturing, reporting cost and everything. And what are the revenues? Revenues are the sales and profits. So these are the things I have prepared, and I don't feel that something is bad to discuss with you. Hope
by just hoping that this is very useful for you. So share it. Just a minute, please. Sorry, I'm not that much good in, stop. Sorry, I'm not that much good in sharing and everything, but hope this is Lean Canvas model is very useful to you. And thank you so much for sparing your precious time. Don't forget to subscribe our channel as the Media Tech team. See you on the next Sunday with the new topic and new innovations. Thank you so much. Jai Hind.